Hello everyone, very good evening and welcome back to BYJU'S Exam Prep. My name is Alpa Sharma and I hope everyone is doing very good today. I hope all of you can hear and see me clearly as well. So a lot of requests for talking about SLAT and its process of selection, including WAT and PI and the number of Cs and multiple other questions about Symbiosis Law Colleges. Here we are with a session. We're going to be talking in detail about SLAT, SLAT group of colleges, its selection process, all of that. Hi Mahil, I hope you can hear and see me clearly. So एक बार जल्दी से कंफर्म कर दो सब लोग, मेरी आवाज सब ठीक से आ रही है, सबको सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है. हम बात करना स्टार्ट करते हैं सिम्बियोसिस लॉ कॉलेजेस की और उनके सिलेक्शन प्रोसेस की, स्पेसिफिकली उनके WAT और PI के बारे में, which is something जो most of the low entrance exams नहीं कंडक्ट करवाते हैं. So स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन अबाउट SLAT. SLAT is a law entrance examination through which you can get into the Symbiosis group of law colleges spread across 4 cities in our country. Now, if you talk to me about the ranking of the college, I would rate it to be one of the best private colleges across the country. बहुत अच्छा ranking है college का, और अगर आप if you manage to get through one of these campuses, it's a very sought after program. So इसकी डिटेल में बात करना स्टार्ट करते हैं, इसकी सारी डिटेल्स देखते हैं क्या क्या प्रोग्राम्स है, किस तरीके से इसका सिलेक्शन होगा. ओवरव्यू, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कॉलेजेस टू अप्लाई और क्या इनका सिलेक्शन का प्रोसेस होगा. सो बिफोर आई बिगिन विद द एजेंडा ऑफ द सेशन, just a quick reminder to you, if you wish to enroll yourself for a program for other law entrance exams, that is SLAT, MHCET, JMI and other law entrance exams, you can register yourself right now with us, as well as we have a new batch coming up for CLAT 2025 aspirants. But for the next 3 days, you can see everything and access everything for free on our app. Just register yourself with your phone number and access everything as a student of our batches and see what we have to offer, and then you can register yourself for our program. So बात करना स्टार्ट करते हैं SLAT की. SLAT is a standalone admission test which gives you admission into the Symbiosis group of colleges. Most of the other colleges in Maharashtra, because Symbiosis का सबसे prominent जो location है वो पुणे में है, but most of the other colleges, yes Mahil, please tell me regarding the SLAT form, regarding the counseling in CLAT, what are your doubts? Okay. So since Symbiosis' most prominent college is in Pune, Maharashtra के बहुत सारे maximum number of colleges in Maharashtra take admission through MHCET, but Symbiosis doesn't take admission through MHCET. उनका एक standalone अलग examination होता है जिसके लिए आपको अलग से एक form fill करना होता है, which is, and the examination is named as Symbiosis Law Admission Test. So just a minute. And through this you can get admission into the 5-year LLB program that they have to offer. Now, they, across all their cities, जो 4 cities है उनके पास, they offer a combination of either BA LLB or a BB LLB program. All of these 4 campuses have both these programs. The number of seats are variable, of course, but both the programs are available in the 4 respective cities that they have. That is Hyderabad, Nagpur, and Pune and Noida. So दोनों programs यहाँ पे हैं, depending upon the program that you choose. आप BA choose करते हो या BBA choose करते हो, you can take an admission into one of these colleges. Conduct कौन करवाता है? Symbiosis International University एक university है और वही university, deemed university, ये examination conduct कराती है. Now, one important thing to note here is that this is going to be an online examination. Unlike CLAT and AILET, जो कि offline paper, pen and paper based exam होता था, SLAT is going to be an online examination. Okay. All right. So when you take this examination online, you'll be given a center depending upon the city you are in, and you'll have to go to the center and start the test. जो ये 1 घंटे का टेस्ट होगा, आपको start करके उसी 1 घंटे के time period में इसको finish करना होगा. So if you are somebody who comes to our classroom, you are well versed with computers and taking tests on computers. So this is not going to be a lot of problem for you. Apart from SLAT, there are a couple of more examinations जो online होंगे, जैसे LSAT is going to be online. ठीक है? So आपके लिए MHCET is not going to be online. अभी तक तो ये जो information है वो. So SLAT online paper होने वाला है. You'll have to go to the center और आपको ये examination लेना होगा. And the examination is going to be conducted only and only in
English. Okay, so let's talk about its eligibility criteria. कौन ये फॉर्म भर सकता है, क्या मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड है, क्या एज लिमिट रिक्वायर्ड है. गुड न्यूज, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से देयर इज नो एज लिमिट. यू डोंट, कोई भी मिनिमम आपको या मैक्सिमम एज नहीं चाहिए. एनीवन एंड एवरीवन कैन फिल आउट दिस फॉर्म. यू मस्ट qualify 12th examination from any of the registered boards. It could be CBSE. आप 12th के पहले और बाद में जब भी एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, आप अपने 12th में होने चाहिए. कोई भी आपकी एज लिमिट हो, आप वो एग्जामिनेशन दे सकते हैं. मिनिमम ऑफ 45% मार्क्स फॉर जनरल and OBC in your boards is needed at the time of selection. Minimum of 40% marks for SC and ST are needed in the boards after your selection is done. So if you are somebody that doesn't qualify into this 45 or 40%, then this might be a little bit of catch for you. But I'm sure 45-40% score करना किसी के लिए बहुत difficult task नहीं होने वाला है, right? So Mahil says something, ma'am, can we go for both the slots for doubt surety? Yes, of course you can. Double surety, yes, of course you can. But Mahil, necessary नहीं है. Also, Mahil, do you know the fact that you need to fill out forms separately for SLS, Pune, Noida? I'm going to make that clarified. Only filling out the form for SLAT is not enough for your selection. You need to fill out individual college forms as well. Other people who still did not get it, wait for me to explain what I'm trying to say here. So, अभी तक आप अपियरिंग है, आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं. 12th का 12th पास हो गया, आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं. बस मिनिमम ऑफ 45% फॉर जनरल ओबीसी या 40% फॉर SC ST नीडेड है. एंड देयर इज नो अपर एज लिमिट. सो विन विन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस डू नॉट रिक्वायर द अपर एज लिमिट. द सेम इज द केस विद द SLAT एग्जामिनेशन. सो अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन एवरीवन? आई होप क्लैरिटी है. ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, क्लैरिटी है. माहिल ने भी यस बोल दिया. अच्छा everyone, did you hit the like button? If you haven't done that, do that right now. Okay. Application fees. ये स्लाइड बहुत ध्यान से सुनना सब लोग, बहुत ध्यान से. रजिस्ट्रेशन फीस फॉर SLAT is 1950, जो अभी तक की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है. बट दैट इज नॉट ऑल. When you sit for SLAT, you are sitting for an examination. बट क्योंकि सिम्बायोसिस के 4 कॉलेजेस हैं, आप कौन से कॉलेज में अपना स्कोर भेजना चाहते हैं, उसके लिए आपको 1000 रुपीज का एक अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा पर कॉलेज. सो इफ यू वांट योर स्कोर्स टू गो टू SLS Noida, you will have to fill out a separate form additionally to it for 1000 rupees for SLS Noida. पुणे के लिए additionally 1000 rupees. अपार्ट फ्रॉम दैट हैदराबाद के लिए, नागपुर के लिए, जो भी आपको फिल करना है, आपको एडिशनली 1000 रुपीज अलग से पे करना पड़ेगा पर कॉलेज. सो इफ यू वांट टू योर स्कोर्स टू गो टू ऑल ऑफ दीज 4 कॉलेजेस, योर एप्लीकेशन फीस इज गोइंग टू बी 1950 प्लस 4000 इंक्लूडिंग ऑल द 4 कॉलेजेस दैट यू आर गोइंग टू फिल आउट फॉर. ठीक है, ऑल राइट. आई एम only opting for BA and BBA in SLS Pune. That's good. You have some clarity about that. But as a backup, since you want to give 2 slots, as a backup, instead of giving 2 slots, Mahil, you can fill out a form for Pune along with Noida, or maybe if you're not very comfortable going to Noida, Hyderabad ka bhi fill kar do, so that you have some backup in your hands. ठीक है. So 1950 जो भी अभी अगर इंक्रीज होके लेटेस्ट अपडेट आता है, प्लस 4000 for individual colleges. So you'll have to pay separate for each program, 1000 for each of the colleges, as I had just now explained. अब सिलेक्शन प्रोसेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं. ठीक है. सिलेक्शन प्रोसेस, जैसे जितने भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, मोस्ट ऑफ देम में एक रिटन एग्जामिनेशन और उसमें स्कोर आपका सफिशिएंट होता है सिलेक्शन के लिए. दैट्स बाय द वे नॉट द केस विथ SLAT. SLAT is selection process is divided into 3 stages: written examination, WAT and PI. इसकी बात थोड़ा डिटेल में करते हैं क्योंकि ये बहुत सारे कॉलेजेस नहीं कंडक्ट करवाते. WAT and PI is not given weightage in other
entrance examinations, but this examination does that. Written examination 100 मार्क्स का आपका होगा, ठीक है, आपका जो भी इसमें स्कोर आता है उसका 50% वेटेज लिया जाएगा आपके फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस में। ये सिर्फ आपको पुणे, नोएडा, हैदराबाद के कॉल में हेल्प करेगा। उसका 50% वेटेज, 30% of the written ability test, that's WAT, and 20% of the personal interview round, a cumulative of 100% here. आपका जो स्कोर आएगा वो डिसाइड करेगा कि आपने जिस कॉलेज का फॉर्म फिल किया है क्या उस कॉलेज में आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। सो ये WAT क्या है, ये PI क्या है, डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में इसकी बात करते हैं। WAT एज द नेम सजेस्ट इट्स अ रिटन एबिलिटी टेस्ट। क्या होता है इसमें, आपको ऐसे लिखना होता है। पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है, you'll have to get dressed like a corporate in your suits or a formal attire. You'll have to go to the center where they have called you for an interview, and a panel of interviewers will interview you and they'll see how eligible you are. What would they gain out of you if they hire you if they select you as a student of their college. So सिर्फ और सिर्फ written examination sufficient नहीं है। That's about the selection process. डिटेल में डिस्कस करते हैं इन दोनों के बारे में आने वाली स्लाइड्स में, ठीक है। सबसे पहले एग्जाम स्ट्रक्चर क्या है हमारा, ठीक है। एग्जाम स्ट्रक्चर से पहले everyone, all the guys watching me live, you have to hit the like button guys, because when we bring a free session to you, there is the Guru Dakshina that you pay. And the Guru Dakshina is in the form of likes and shares. And if you don't do that, it doesn't help us. So your way of repaying me for the session that I bring to you is by hitting the like button, is by subscribing to the channel if you haven't done that, and by commenting under the video. If you're watching it, record it. So here we go. We have 60 marks का आपका पेपर है, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जीके, सिंपल सा पेपर, 1 घंटा आपके पास टाइम, 60 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, 60 मिनट्स में आपको वो सॉल्व करने हैं। विन विन क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, नो ग्रामर, नो वोकैबुलरी, सिंपल पैसेजेस, simple questions coming in. So because you've already been doing reading comprehensions for CLAT, AILET, SLAT will replicate that. For that matter of fact, LSAT will also replicate that for a lot of extent. Although the kind of passages LSAT will give you will be little bit different than the kind of passages we've seen coming up in SLAT examination, but LSAT is also dominated by reading comprehension, similarly like SLAT. So we have reading comprehensions, 12 questions यहाँ आएंगे। देखो इतना सिंपल, इतना छोटा सा पेपर है, आप शुरू करोगे और आपको लगेगा ये तो खत्म हो गया। It's not like CLAT और AILET जहां आप 2 घंटे के लिए बैठते हैं, आप पूरा पेपर सॉल्व करते हैं, 120-150 नंबर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आप उनको सॉल्व करते हैं। इट्स अ सिंपल 60 मार्क्स का पेपर, 60 मिनट्स में आपको सॉल्व करना है। क्विकली आप स्टार्ट करेंगे और ये ओवर हो जाएगा। सो ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको लैपटॉप स्क्रीन के सामने बहुत देर बैठनी है, you have to strain your eyes. No. So you have logical reasoning. It will be a mixture of critical reasoning as well as the analytical reasoning. This is going to be predominantly analytical, legal reasoning and GK. Simple questions आने वाले। 1 घंटे का पेपर है, जल्दी से खत्म हो जाएगा। +1 for every correct and another win-win. You have no negative marking. Can you guys name another examination, other law entrance examination apart from CLAT and AILET that doesn't have any negative marking? नेम कर सकते हैं कोई एग्जामिनेशन जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है? एक नहीं 2 हैं ऐसे और जो होने वाले हैं जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बता सकता है कोई मुझे? Anyone who can tell me about any of these examinations? LSAT, MHCET, right? All righty. So SLAT भी एक बात याद रखना, जब आप ये टेस्ट लेंगे आपको पता है यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप 100% क्वेश्चंस मार्क करके आएंगे, छोड़ के एक भी नहीं आना। आता है नहीं आता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो 100% तो मार्क करके ही आना है ना। चाहे बी मार्क कर दोगे ना तो भी शायद चांसेस है कि कुछ तो करेक्ट हो ही जाएगा उसके अंदर। या LSAT एब्सोल्युटली अदिति करेक्ट। बात करते हैं WAT की। WAT में यूजुअली यू आर गिवन 2 टॉपिक्स and out of the 2 topics you are supposed to write an essay.
on one of the topics that you select. बहुत कॉमन टॉपिक्स आते हैं सब, अगर आपने न्यूज़पेपर्स रेगुलरली पढ़े हैं ना लास्ट एक साल में, you are going to be very good with writing on one of those two topics, usually commonly discussed, like wars happening in Israel, Hamas war, or for example wars, हम बात करते हैं बिटकॉइंस की, हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ये कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जो आपको दिया जा सकता है, एंड ऑल ऑफ दीज हैव बीन डिस्कस्ड इन द न्यूज़पेपर्स। सो आपको 2 टॉपिक दिए जाएंगे, ठीक है, और उन दोनों टॉपिक्स में से आपको एक टॉपिक चूज करना है, और जस्ट अ मिनट, उन पे एक पे आपको ऐसे लिखना है। एक बात याद रखना है इधर कि कॉमन एक बॉडी है जो SLAT कंडक्ट कराएगी, बट PI और WAT आपकी इंडिविजुअल कॉलेजेस कराएंगे जहां का फॉर्म आपने फिल किया है। सो इफ यू फिल्ड आउट पुणे's फॉर्म, पुणे विल कंडक्ट योर WAT एंड PI। SLAT एक अलग बॉडी कंडक्ट करा चुकी है, ठीक है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बॉडी जो है, बट जो इंडिविजुअल कॉलेज है, नोएडा का फिल किया तो नोएडा में आपका नोएडा कंडक्ट करवाएगा आपका WAT and PI. So you'll have to go there at the center they have provided you with. You'll have to sit for PI in front of the panel. You'll have to write the WAT then and there according to the dates they have provided you with. Yes, absolutely. MHCT as well, LSAT as well. Correct. Okay, 1 minute, guys. Something's wrong. Okay. So of course, only sitting for SLAT is not enough. आपको ये दोनों देना पड़ेगा एक फाइनल सिलेक्शन के लिए। सो रिटन एबिलिटी टेस्ट है, 30 मिनट्स आपको मिलेंगे, 2 टॉपिक आपको दिए जाएंगे और 2 टॉपिक में से आपको एक टॉपिक पे शॉर्ट ऐसे लिखना है। FYI, now that I'm talking about SLATs, WAT and PI, would you guys want me to conduct sessions on WAT and PI on our channel? And would you want me to train you on how to write essays, how to sit for interviews, do's and don'ts for that, what answers you can frame? Do you want me to help you with that? If yes, you can comment right now. If you're watching it recorded, you can comment under the video so that I can plan some sessions on WAT, written ability test, as well as personal interview. So remember, 2 topics given to you on one, choosing one, you have to write a short essay within 30 minutes. I can bring some commonly asked topics to you. मैं आपको लास्ट 2 या 3 साल के WAT टॉपिक्स भी डिस्कस कर लूंगी इन सेशंस में। Yes, Aditi? Sure, I'll plan some. Others, you can later on comment under the video if you need some sessions on that. अब बात करते हैं एक एवरेज कट ऑफ की, ठीक है। जब हम SLAT के कट ऑफ की बात करते हैं, क्योंकि हमारा ये ओवरऑल 60 मार्क्स का पेपर है, आउट ऑफ 60 मार्क्स जो पुणे, नोएडा, हैदराबाद, नागपुर 4 कॉलेजेस है, इनकी रैंकिंग इसी ऑर्डर में आती है और यही इनका ऑर्डर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट भी है। So the oldest college being Pune is the most prestigious Symbiosis law school that we have in our country out of the 4. It's the most prestigious one. उसकी कट ऑफ ऑब्वियसली हाई जाएगी क्योंकि वो रैंकिंग में भी इन चारों में सबसे ऊपर आता है। सो पुणे है हमारे पास। एक रफ कट ऑफ मैं आपको बताती हूँ, इसी के आसपास कट ऑफ जाती है यूजुअली। सो 60 में से 45 से 48 के आसपास कट ऑफ जाती है पुणे की। सो यू हैव टू टारगेट अ स्कोर 45 plus at least so that you're able to be safely inside SLS Pune. नोएडा का स्कोर देखेंगे तो रफली 43 से 45, 45 से 43 जाती है। We have हैदराबाद 40 से 42, नागपुर 35 से 38. सो एक रफ ब्रैकेट 60 में से अगर आप देखें, आपको 35 से 50 के बीच में स्कोर लेके आना है वन ऑफ दीज कॉलेजेस में लैंड अप करने के लिए। प्लीज देखिए आप कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हैं। यू हैव टू फॉल इनटू वन ऑफ दीज कैटेगरीज। ये एक ब्रॉड ओवरव्यू दिया है मैंने आपको। ऑफ कोर्स इस साल क्या कट ऑफ होगी वो इस साल के नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स और कितने लोगों ने अप्लाई किया, डिफिकल्टी लेवल क्या था पेपर का, उस पर डिपेंड करेगा। बट ओवरऑल दैट्स गोइंग टू बी एन एवरेज कट ऑफ। यूजुअली इसी के बीच लाया करता है। पास्ट 3-4 साल का यही ट्रेंड रहा है अबाउट द प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स। Yes, one thing to note is that BBA LLB की कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है compared to BA LLB. Why? Because more people seek admissions into BA LLB as compared to BBA LLB. So 2 या 3 मार्क्स का डिफरेंस हो सकता है हायर कट ऑफ इन BA LLB as compared to BBA LLB.
My suggestion, if you're very keen in going into this college, fill out both of these forms, BA and BBA. If you are okay going here and here, you can fill out one here form and one form here. Because बहुत ज़्यादा वेरिएबल नहीं है, 1-2 मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है BBA और BA में. Yes, Debarati, absolutely. In line. Aligned with that, okay? So the cutoffs of BA goes a notch higher, slightly higher than the BBA exams. Let's talk about the participating colleges. As I said, it's a deemed university and we have 4 participating colleges. We have Pune, Noida, Hyderabad and Nagpur. And their ranking remains in the same order. Isi descending order mein. Pune being the best, second best Noida, third Hyderabad and fourth Nagpur. This is a college I would highly recommend, but then some people have some notions about the cities, but uske बारे में हम नहीं कुछ discuss कर सकते. So I will let you and your parents decide which college are you the most comfortable with. I would recommend this college over all of the remaining 3 colleges that we have here. SLS Pune is of course the best in the 4 campuses that we have. Now courses offered, as I said, every college offers BBA and BA separate programs. The number of seats in BBA is higher in all of at least these 3 programs. Okay, so we have BBA with 180 seats here, BA with 120 seats. Noida as well 180 and 120, SLS Hyderabad 180 and 120, and Nagpur 120. Now this is the last news that I've had of 1080 seats. There may be a possibility that this year they introduce more seats, but that's the last information that I've had. If they introduce more seats, the better your chances are of being selected. Okay, so in total of 1080 seats, specifically Pune की बात करेंगे तो 180 seats आपके पास BBA के लिए हैं, 120 seats आपके पास BA के लिए हैं. ठीक है, 1 minute. Overall 1080 seats. Reservations, yes, of course we have reservations. We have SC's 15% reservation, ST 7.5, differently abled 3%, but we have a bit of more reservation for defense personnel, that is in the next slide, and Kashmiri migrants, 2 seats. Defense personnel के लिए भी reservation है, which is 5%. So if either of your parents have been defense personnel, you can grab a seat in this quota, 5% of that. You also get SLS Nagpur domicile in Nagpur of 25%. So everyone, GLC Mahil, absolutely without an ounce of doubt. It's the oldest college, one of the oldest law colleges in the entire continent. आप उसकी जो alumni हैं, उसको match ही नहीं कर सकते. If you're seeking for placements through GLC, आप जिस तरीके की licensing बनाएंगे उस college में जाके, there is not an ounce of doubt that GLC is going to be preferred by me over SNS. I have no doubt in my mind about that. In fact, GLC and ILS both will be preferred over SLS Pune for me. I would rate them better for the sheer fees that they have, for the sheer experience they provide you with, because of the alumni that they have. आपके लिए internship करना बहुत अच्छी जगह, बहुत आसान होगा when you take a tag name with you. So getting back to reservation, domicile in Nagpur 25% and defense ward personnel ward 5% for that. That's the reservation provided. Now, I hope you got a fair idea about the selection process, the courses offered, the colleges that SLAT has. I would surely try to plan more sessions on WAT and PI for you so that you are well versed with what to write, how to write in detail. If you need one of those, make sure you comment under the video. If you have any other questions, you can comment under the video as well. We have a test series that we have launched, as well as a batch that we have launched that prepares you in detail with other law entrance tests. So you can register yourself as soon as possible. Just call the counselors on this number.
You can just comment under the video with your phone number and someone from our team will ensure that you get a call. All the 2025 law aspirants, we have a new batch coming up right away. Do not delay, start your preparation sooner. 3-day free trial, we have to register कर लो 3-day free trial के लिए with your phone number and then see us in the batches after a while. Make sure you hit the like button before you leave. Make sure you subscribe to our channel before you leave and follow us on all our social media handles, Instagram, Facebook, Telegram, and download our app on Google Play for loads of content. I hope all of your questions were answered. Have a very, very good night, everyone. God bless you.